Hey, good morning, everyone. Welcome back here today. We will continue from today. So, I was out for a few days last week, hence, we are not able to connect. Okay, so today we will, we are going to discuss one of the most important topic in Microsoft Dynamics CRM, which includes Microsoft Power Pages, which is web roles, and the complete Power Pages security models. Like in Dynamics CRM, we have security roles. In Power Pages, we have web roles. If you are in Dynamics CRM consultant, Power Pages developers, technical architect, or someone preparing for interview, then this session is going very extremely useful for you. Many developers understand Dynamics CRM security role very well, but when they are starting working on Power Pages, they often get confused between security roles, web roles, and table permissions and the page permissions. So today I'm going to explain everything from scratch with practical example and real world business scenario. So by the end of this session, you will understand what is web roles, why do we need web roles, how to create a web roles, how to assign web roles, and what are table permissions here, what are page permissions, how security works in Power Pages. So, and also this is very important, like difference between web roles and dynamic CRM security roles. So best practice and some interview questions we will cover if we have some times. Okay, so hope you understand the agenda of these particular sessions. When we require security role, when we need, table permissions, what is the use of table permission, and what are the page permissions here. So before understanding web roles, we must understand how security works in Power Pages, right? So hope everyone joined here. Yeah, good morning, everyone. Let's ask other also to join here who have time, so that we can utilize here our maximum time. So let's assume we have to create a customer portal. Customer portals means, we already discussed the different types of portals in dynamic CRM. So suppose we are creating a customer portal. A customer portal open your portal website. The first questions Power Pages ask is, who is this particular user? Like, this is called authentications. For example, suppose if there is a public website or there is a authenticated website. So public website means anyone can access. There is no specific users to log in into the system. Anyone can read it. Maybe there might be some requirement where we have to use, uh, some of the that level of information, if we need to, showcase into the one place where some valid or authenticated user only can see that specific data. In that case, we required a specific authentication. So how we are verifying, like, this is a right candidate, this is a authenticated user who can see that particular content or that information. So for that, for authentication purpose, what we require for any applications, anything normal scenario, like, we may have, local logins. We may require Microsoft Extra ID to log in into Power Pages. We may require Google login, for example.
maybe you can use your Gmail ID authentication. You can authenticate from Google. Maybe you can log in from the any social media platform which is, we have integrated. For example, Facebook login. For example, uh, we have given uh, to log in into the portal with your LinkedIn ID, so that at least we know who is logged in into our portals, so that we can maintain that information. Once the user successfully log in, Power Pages creates or identify a contact record in database. Either you have a valid users as a contact, we are going to authenticate you through a contact, not a users. We have two types of information here. Either we have to give authentication either via a logged in users, but for that one you be required a license. But here we are maintaining users or authenticated users as contact, because we are giving to access to our customer, or maybe that we have maintained into the contact entity, not in user entity. For user level, we are having different identification or different licensing models. So now Power Pages may ask you another questions. What can this user access? Suppose if you have different types of authentication mechanism, so we can define that one also. For example, uh, I have given you Microsoft. If you logged in user is a Microsoft Extra ID, Entra ID, then we are giving, or we are giving you some additional content into the pages. But if we are giving you as a Google login or social media platform, maybe we are giving you different types of landing page, so that you can get different information. So if you are able to access through different login, authentication, authorization, so in that case, authorization may be managed through web roles, page permissions, or table permissions. So suppose what types of entity you are able to see, what types of page you are able to see, what types of tables you are able to see. So that's the very basic, understanding you should know. Authorization plus authentication is equal to complete security model. Authorization and authentication. Authorization means what types of pages, tables you are authorized to see, and authentication is a separate. Authentication means if you are a valid contact, you have application access, then you can see you are able to log in into Power Pages. What types of information you can see? That is called that authorization. Authentication, you can log in via Enter ID, Google login. So that's the complete security model. If authentication and authorization, authentication plus authorization is a complete security model in Power Pages. That's the final authentication. You need some authorization also. If you only have authorization but authentication is not available here, you cannot access the Power Pages. So authorization plus authentication both need to be there to complete your security model in Power Pages, right? So I will add you one line here, so that you can understand this one. Okay, so we will discuss more about what are the security or what are the web roles here. So let's talk about the web roles.
web role in the Power Pages or web role in a portal specific security role assigned to the contact record. So suppose in dynamic CRM, you everyone know, like, be if even you have a valid license, but you don't have any valid security role, so you cannot log in into the dynamic CRM, even if you have a valid license user. So similarly, if you need to log in into Power Pages, so you required authentication, then authorization. So you required a web role. You required a portal specific security role assigned to the contact record. Think of web roles as a mechanism or defining who can access what's inside a portal. So suppose I will give you one example. आपको ये पता है कि आपको पोर्टल का एक्सेस मिल चुका है, बट पोर्टल के अंदर आपको क्या देखना है, any specific things if you can read, you can view, so we can control that one with web roles. वेब रोल के अंदर आपने क्या डिफाइन किया है? वेब रोल के अंदर आपने डिफाइन किया है, आप केसेस देख सकते हो, आप स्पेसिफिक टेबल की परमिशन दे सकते हो, आप क्या क्या उसमें किस लेवल की परमिशन उसमें दे सकते हो, वो आप वेब रोल्स में डिफाइन करते हो. वी विल सी हाउ टू क्रिएट ए वेब रोल, बेसिक वेब रोल, and what types of web roles we are defining in the Power Pages. I will show you my screen also. Let me log in into our trial environment so that we can create a very basic website that we have created earlier. Okay, so here meanwhile it's logged in. Okay, so I hope you understand the web roles. Similarly, like in dynamic CRM, we are creating a security role. We need to create a web role so that we can define who can access what inside a portal. For example, suppose you have a university portal. I will give you very basic example. Different users will have different responsibility, राइट? अगर हमने एक यूनिवर्सिटी पोर्टल बना दिया है, तो यूनिवर्सिटी पोर्टल के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यूजर्स बनाते हैं, पता है हमें. फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट्स logged in also there, faculty logged in also there, administrator or maybe some university top admin users, they can see some different level of information. So स्टूडेंट के लिए क्या देखना चाहिए, क्या क्या इंफॉर्मेशन उसको दिखनी चाहिए, क्या स्टूडेंट को वहां पर अगर स्टूडेंट लॉग इन कर रहा है तो क्या सारे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन उसे दिखनी चाहिए, कितना पेमेंट यूनिवर्सिटी को आया है, कौन सा कैंडिडेट ने कितने मार्क्स मिले हैं, लॉग्ड इन कैंडिडेट को वो क्या क्या इवन वो किसी भी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन एडिट कर पा रहा है, स्टूडेंट ने लॉग इन किया और वो वहां जाके मार्क्स भी अपडेट कर पा रहा है. इज देयर एनी पॉसिबिलिटी वी हैव टू गिव एवरीथिंग टू द स्टूडेंट्स? नो, राइट? सो specific user can perform only specific information, they can read only specific information. जो इंफॉर्मेशन जिसके काम की है वो इंफॉर्मेशन वो ही कैंडिडेट देख पाए और वो ही इंफॉर्मेशन और या स्पेसिफिक टास्क कर पाए. मैंने अगर आपको कहा स्टूडेंट का अगर हमने लॉगिन बनाया तो स्टूडेंट को क्या क्या ऑप्शन हमें देना चाहिए? दे कैन सी देयर ओन प्रोफाइल, what they have, they can even edit their profile,
उन्होंने क्या अपने प्रोफाइल के अंदर डाला है। जैसे आप लोग फेसबुक, आप लोग इंस्टाग्राम, आप लोग अदर अदर प्रोफाइल्स पे जाके अपना प्रोफाइल या लिंक्डइन के प्रोफाइल पे जाके चेक चेक कर पाते हैं। किसी दूसरे के प्रोफाइल में अगर आप देख पा रहे हो, बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटी और द परमिशन अदर्स कैंडिडेट्स ऑल्सो गिवन, you can see even in the LinkedIn also, but you cannot edit their personal information. You cannot post anything on behalf of others. तो कौन से कैंडिडेट को क्या क्या इंफॉर्मेशन, क्या क्या परमिशन देनी है, ये सारा कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए। ये सारा कंट्रोल हम कैसे कर पाए? हमारे पास ऑप्शन हो कि ये अगर हम डिफाइन कर दें कि स्टूडेंट का हमने एक प्रोफाइल बना दिया, एक रोल बना दिया कि स्टूडेंट कैन सी ओनली देयर ओन प्रोफाइल्स, student only can view their own applications, and even if needed they can edit their applications also after a certain stage. Student can only view their own course, whatever they applied. They cannot read the others data also. तो अगर हम, हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि हम वो कंट्रोल कर पाए कि एक स्टूडेंट्स या एक स्पेसिफिक प्रोफाइल्स या एक स्पेसिफिक कैटेगरी के कैंडिडेट्स को वही इंफॉर्मेशन दिखानी है जो हमें वहां पर कंट्रोल कर पाए। सिमिलरली फैकल्टी, फैकल्टी को क्या क्या इंफॉर्मेशन दिखनी चाहिए? क्या फैकल्टी को इंफॉर्मेशन, क्या फैकल्टी अपनी खुद की इंफॉर्मेशन देखेगा क्या? दे कैन रीड ओनली दोज रिकॉर्ड्स विच दे बिलोंग्स टू, दे सपोज टू सी दैट डेटा। अगर सपोज एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में एक साइंस का टीचर है या केमिस्ट्री का टीचर है, केमिस्ट्री में भी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट का टीचर है, so they can see only those candidates who are choosing that specific course. और अगर सपोज फर्स्ट ईयर का टीचर्स है, वो सेकेंड ईयर का टीचर्स है, फोर्थ ईयर का टीचर्स है, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को पढ़ाता है, तो आई शुड हैव कैपेबिलिटी टू कंट्रोल दैट लेवल ऑफ डिटेल ऑल्सो। फैकल्टी के पास क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कर पाए वो? स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड देख पाए जो कि उसकी क्लास के हैं। अटेंडेंस, दे कैन टेक द अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, दे कैन सी द रिजल्ट्स एंड इवन दे कैन एडिट द इंफॉर्मेशन एंड दे कैन ऐड द रिजल्ट लेवल इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट को नहीं दे सकते ना ये रिजल्ट की इंफॉर्मेशन। So sometimes we need to categorize different types of users based on the task which we supposed to perform with these particular applications. Is it clear? Morning. So देखो, हमारे पास कोई भी किसी भी टाइप का अगर हम पोर्टल्स या एप्लीकेशंस बना रहे हैं तो ऐसा हमें कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही टाइप के यूजर्स से हम सारा कुछ कंट्रोल कर लें। वी रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, समटाइम्स व्हाट वी कैन से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स सो दैट दे कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी इन डायनेमिक्स और मे बी इन पोर्टल्स। तो हमने अगर पावर पेजेज या पोर्टल्स अगर हमने बनाया है एक यूनिवर्सिटी के लिए, तो स्टूडेंट, फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेटर्स व्हाट दे कैन डू? एडमिनिस्ट्रेटर, सुपर यूजर्स वी कैन से, they can see everything inside portals. Why? Because they have full authority. They have to see everything. They can see different types of dashboard. They can see the students information. They can even read each and every student. They can even edit the student information. Suppose there is a requirement coming into the super admin user.
they require to edit one candidate's mobile numbers or email ID. So it is not like they have to raise a request to the developer, say, I want to edit this email ID to the candidate. So at least one user should have access who can perform everything inside that particular portal. That is called super admin. How to control those level of access? That we are controlling with the help of web roles. So using web roles, students, example of web roles. तो हमने, अगर हम वेब रोल्स इसमें बनाने चाहें तो किस किस टाइप के वेब रोल्स हम यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट में दे सकते हैं? एक वेब रोल्स बना दें हम स्टूडेंट्स के लिए, दूसरा वेब रोल्स बना दें हम फैकल्टी के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर्स, वेंडर्स, पार्टनर्स, कस्टमर्स। अरे यूनिवर्सिटी में बहुत सारे वेंडर्स हो सकते हैं। वेंडर्स कौन कौन से हो सकते हैं? वेंडर्स हमारे हो सकते हैं जो स्टेशनरी प्रोवाइड कराए यूनिवर्सिटी में। वेंडर्स हो सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्रोवाइड कराएं। यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ काफ़ी सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगते हैं, प्रिंटर, लैपटॉप, ब्ला ब्ला, ट्यूबलाइट्स, और मे बी वायरिंग, प्लम्बिंग का काम, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेंडर्स ऑल्सो कैन logged in into the university portal. Based on that one, maybe we can ask for one requisition or requirement, like, hey, we need thousands of printers, or maybe thousands of bulb, or CFL, or tube lights. So they can raise that particular here requirement. Partners or customer, we may have different types of partners on university, so we can define that particular web roles, and we can assign, suppose we have 10 different, we have created 10 different contacts. So we have given web role, student web role for all the students. We have given web roles faculty or all the faculty for faculty web roles. We can give an administrator web roles to the administrator user. Similarly, we can given vendors web roles to the vendors, partners web roles to the partners, customer web roles to the customers. ये क्लियर है? हम डिफरेंट टाइप्स के वेब रोल्स बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट यूजर्स को कंट्रोल करने के लिए. दैट इज आवर बेसिक नीड फॉर एनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस. दैट इज द बेसिक थिंग्स यू शुड अंडरस्टैंड. आपको पता होना चाहिए वेब रोल्स की जरूरत क्यों पड़ रही है, अलग अलग टाइप्स के यूजर्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है. इफ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट इंफॉर्मेशन, वी कैन गुड टू गो फॉर नेक्स्ट स्टेज. So अगर same website can show different information to the different user based on the assigned web role. भाई मेरी वेबसाइट या मेरी वेब एप्लीकेशन एक ही है, बट मैं एक यूजर से लॉगिन करता हूं तो अलग टाइप की इंफॉर्मेशन मिलती है, दूसरे यूजर से लॉगिन करता हूं अलग टाइप की इंफॉर्मेशन मिलती है, तीसरे टाइप के यूजर से लॉगिन करता हूं तो मुझे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन मुझे वेबसाइट पे दिख रही है. So that's my end goal, so that I can show the different types of information based on different types of users. तो अब हमें वेब रोल्स बनाने हैं, ये हमारा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. भाई मुझे एक स्टूडेंट के लिए सिर्फ स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन दिखानी है, मुझे एडमिनिस्ट्रेटर को दिखाना है तो टॉप लेवल की परमिशन, सब कुछ दे कैन रीड, दे कैन परफॉर्म ईच एंड एवरी एक्शन इन द पावर पेजेस पोर्टल. अब मुझे कैटेगराइजेशन आना चाहिए कि मुझे अपनी एप्लीकेशंस के एंड यूजर्स किस किस टाइप के एंड यूजर्स होंगे, सो दैट आई कैन डिफाइन, आई कैन कंट्रोल डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सेस, डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन देयर नीड. एक्चुअली मैं कस्टमर को स्टूडेंट का प्रोफाइल नहीं दे सकता, वेंडर्स को एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बना सकता. तो अगर मुझे एक प्रॉपर एप्लीकेशंस को कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, तो मैं डिफाइन करूंगा कि कौन सा कैंडिडेट किस तरह की इंफॉर्मेशन देखेगा.
then only I can manage my applications. Is it clear for everyone? This is very best example I have given you, that you all as a student, आपने किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में काम किया है, आप लोगों के पास भी यूनिवर्सिटी का पोर्टल होगा, यूनिवर्सिटी में सुपर एडमिन काम करता होगा, आप लोगों ने एज ए स्टूडेंट भी आपके पास मिला होगा। No, CSS, JavaScript, Bootstrap are the component that we are utilizing to design or develop anything. वेब रोल हमारे एक्चुअली क्या रहता है ना, देखो, आप अगर आप सिक्योरिटी रोल कभी आप बनाते हैं, सिक्योरिटी रोल में आप डिफाइन करते हो कि आप सिक्योरिटी रोल में एक वेब रिसोर्स आपने बनाया है जावास्क्रिप्ट का, उस जावास्क्रिप्ट के अंदर आप कंट्रोल कर रहे हैं कि ये वेब रोल हमारा डिफाइन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हम अपने कोड के अंदर वेब रोल के बिहाफ पे कुछ हाइडेंस हो, कुछ इंटरनल लॉजिक हम उसके अंदर डिफाइन करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन गिव ए अप्रूव्ड डिसअप्रूव्ड बटन बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक वेब रोल, कि मतलब मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटर या फैकल्टी के पास ही मेरा एक बटन है जो दिखाई देगा, सो दैट दे कैन अप्रूव और रिजेक्ट for that particular candidate attendance. बट मैं वेब रोल्स CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट या बूटस्ट्रैप की तरह हम वेब रोल एक कंप्लीटली सिक्योरिटी मॉडल्स है, सिक्योरिटी कंपोनेंट है। बट HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये तो देखो, मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूँ जो कि मे बी आप लोगों को पता हो ज़्यादातर। जावास्क्रिप्ट या जो भी हमारे HTML के कंट्रोल हैं, सपोज ये ब्यूटिफिकेशन के लिए काम में आते हैं। ब्यूटिफिकेशन मतलब जो कि हमारा UI किस तरह से दिखेगा। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम हाइड एंड शो का यूज कर सकते हैं, कौन सा कंट्रोल, हम क्या डेटा दिखाना है, कहाँ से डेटा उठा के लेके आना है। HTML से हम बेसिक UI बना सकते हैं, CSS से हम उसको और ब्यूटीफाई कर सकते हैं। सो ये तो हमारे सारे कंट्रोल हुए। अब देखो, अब हमारे पास क्या रहेगा कि टाइप्स ऑफ वेब रोल्स कौन कौन से हैं। There are three main category of web roles. First is anonymous users. Anonymous users means, देखो, anonymous users से हमें पता चलता है कि who have not logged in, हमने अभी लॉगिन नहीं कराया है। ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन, ऐसी कुछ सर्टेन इंफॉर्मेशन जिसके लिए लॉगिन की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे क्या होता है, फॉर एग्जांपल, एनोनिमस यूजर्स के लिए दिखाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे लैंडिंग पेज है, मेन पेज है, होम पेज जिसे बताते हैं। होम पेज में जब तक आप वेबसाइट का होम पेज ही एक्सेस नहीं कराओगे किसी को भी, आप लॉगिन का बटन कहाँ देंगे। There should be one interface, one common place where you have to, give a platform where they can perform, at least they can logged in into the system. आपने एक एप्लीकेशन बनाई, आपने लॉगिन पेज को ही ऑथेंटिकेटेड बना दिया, जब तक कि आप ऑथेंटिकेटेड यूजर नहीं होंगे आप इस पेज को लॉगिन ही नहीं कर पाएंगे। अरे आपको कम से कम कोई एक ऐसा इंटरफेस या एक ऐसा पेज ऐसा देना पड़ेगा। कोई .NET का डेवलपर्स अगर हो यहाँ पर, उसको पता है लॉगिन पेज में हम ऑथेंटिकेशन नहीं देते हैं। लॉगिन पेज एक ऐसा ऑथेंटिकेशन, एक ऐसा पेज होता है जो पब्लिकली कोई भी एक्सपोज कर सकता है, so that they can enter their user ID and password and click login or hit submit, so that we can identify either this is a valid user or not. So we have three category here.
एनोनिमस यूजर्स, सो एनोनिमस यूजर्स क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं? होम पेज, अबाउट अस पेज। अरे अबाउट अस पेज जाके कोई फेक किसी ने वेबसाइट ना बना दी हो आपकी, या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप पब्लिकली किसी को भी दिखाना चाहते हो, अबाउट अस कोई देख लेगा तो क्या लेके चला जाएगा? हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन, ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन ही उसमें एनोनिमस यूजर्स को दिखानी है जिसमें उनको ऑथेंटिकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कॉन्टैक्ट अस पे, अरे कॉन्टैक्ट अस में कोई भी जाए, कोई भी वहां जाके देख पाए, ये हमने पब्लिकली एक्सपोज किया हुआ है, जैसे लाइक ए पब्लिक वेबसाइट। एफएक्यू, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो हमारे होते हैं, एफएक्यू का एक सिंपल सा एक सेक्शन आप अलग बना के देते हैं जिसमें लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉमन क्वेश्चंस हम बना के रखते हैं। उसमें हमें ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। सो इन आवर वेबसाइट और पावर पेजेज और वेब पेज, we have some page where we are not giving any authentication. So those types of page we have to define as a anonymous users, where user need not to log in into those page. So those page might be home page, about us page, contact us page, FAQ page, जहां पर लॉगिन की जरूरत पड़ती ही नहीं है, लॉगिन देना ही नहीं। लॉगिन वहां पर एक ऑप्शन हम दे पाए जहां पर यूजर्स कैन लॉग इन इनटू द सिस्टम, दैट पेज माइट बी होम पेज और मे बी योर लॉग्ड इन पेज। अब एक पेज, एक हमारा कैटेगरी हो गई एनोनिमस यूजर्स। मैं पूछ सकता हूं ये क्वेश्चंस बाद में। सो इफ यू आर हियर, यू हैव टू बी हियर कंप्लीटली। सो पहला एनोनिमस यूजर्स हो गया, दूसरा ऑथेंटिकेटेड यूजर्स। ऑथेंटिकेटेड यूजर्स हमारा वेब रूल्स अगर है, डिफाइन किया है, ऑथेंटिकेटेड यूजर्स मींस वेयर यूजर्स हु हैव लॉग्ड इन। लॉग्ड इन यूजर्स, लॉगिन करने के बाद जो आपको पेज डिस्प्ले होते हैं, जो दिखाई देते हैं, मे बी आप लॉगिन करने के बाद एनोनिमस पेज भी दिखा सकते हो लिंक में, बट लॉगिन करने के बाद आपको क्या दिखाई देगा, क्या क्या आप देख सकते हो? बिना लॉगिन किए आप वो पेज नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल, I will give you very simple information here. For example, if you are logged in, आपने लिंक्डइन का पेज ओपन किया, होम पेज ओपन किया, क्या दिखता है बिना लॉगिन किए? वेयर यू कैन चेक बेसिक इंफॉर्मेशन। Basic information means where you can see logged in page, where you can see some other information. Maybe Facebook पे आप लॉगिन करते हो, maybe किसी अदर एप्लीकेशंस पे आप लॉगिन करते हो, इंस्टाग्राम पे लॉगिन करते हो। तो आप लॉगिन करने के बाद क्या देखोगे और लॉगिन करने से पहले क्या देखोगे? लॉगिन करने से पहले जो दिखोगे वो एनोनिमस यूजर्स होगा, और लॉगिन करने के बाद जो दिखाई देगा वो आपका ऑथेंटिकेटेड यूजर्स होगा। लॉगिन करने के बाद क्या क्या दिखेगा आपको? जैसे माई प्रोफाइल्स, डैशबोर्ड, अगर कोई डैशबोर्ड बना हुआ है, कोई आपने सर्विस रिक्वेस्ट रेज की हुई है, इफ वी टॉक अबाउट एनी सर्विस बेस्ड थिंग्स, तो आपने लॉगिन करने के बाद क्या क्या दिखाया हुआ है, तो वो हमारी दूसरी कैटेगरी होती है ऑथेंटिकेटेड यूजर्स की, जो आपको लॉगिन करने के बाद दिखाई दे। माई प्रोफाइल्स, you can see your profiles, you can edit your profiles, you can update your profiles, you can add dashboard, whatever activity you can. Maybe you can create a request, you can track your request, you can see some maybe whatever functionality we have given, see all those information after logging into the portals, that you can do. Yes, users, we covered authenticated users web profiles, and now even you can create some custom web roles also. Custom web roles,
For examples, custom web roles inside authenticated users that we have already discussed. Students, maybe you can create, customer you can create, vendors you can create, faculty you can create, partners you can create. So these roles provides business specific access. जैसे हमने डायनेमिक सीआरएम में सिक्योरिटी रोल्स के अंदर अगर आप लोग जाके देखें तो कुछ सिक्योरिटी रोल्स बाय डिजाइन माइक्रोसॉफ्ट क्रिएट करके देता है. You can create your own security roles also. Own security role कब create करने पड़ते हैं? That is called our business need. Suppose I have, there is a salesperson security role. Salespersons have different types. I have created a new custom entity. So I have to define that custom entity access permission. स्टूडेंट की मैंने एक कस्टम एंटिटी बनाई. स्टूडेंट की कस्टम एंटिटी के ऊपर मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि उसको रीड एक्सेस किस लेवल का है, राइट एक्सेस किस लेवल का है, डिलीट एक्सेस किस लेवल का है, अपेंड टू या शेयर या जो भी हमें फर्दर एक्सेस है वो किस लेवल के दिखाई देंगे. होप इट्स क्लियर फॉर एवरीवन. कौन कौन से वेब रोल्स हमने डिफाइन किए, कौन कौन से यूज किए हमने अभी तक, जो अभी हमने डिस्कस किए हैं? एनोनिमस एंड दूसरा कौन सा था हमारा? ऑथेंटिकेटेड यूजर्स. ऑथेंटिकेटेड यूजर्स के अंदर हम कस्टम वेब रोल्स बना सकते हैं बेस्ड ऑन आवर बिजनेस नीड. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, कस्टमर, वेंडर, फैकल्टी और पार्टनर, जो हमने अभी डिस्कस किया है. राइट? क्लियर है अभी आप लोगों का, या अभी कुछ आप एक वेब रोल बना के देखें? हाँ, मैं स्क्रीन ही शेयर करने जा रहा हूँ. Let me share my screen here. देखो, ये हमारा टाइल एनवायरनमेंट है वेयर यू कैन सी पावर पेजेस मैनेजमेंट. Here what we have seen here in the security role, table permissions, column permission, even we can see here web roles, active web roles here, even we can define here. Are you able to see my screen, right? Here you can define authenticated users roles or anonymous users roles. Yes or no. Here you can define those information. So based on that information, suppose is there any website? I don't think so. We have any website.
We have to create a website, web pages here, but I don't think so we can. We have that set up. Default language. We have to set up one website here, then only we can create that one. Language. We have to create a website here first. So if we need to set up one, I think we have created one website, but that is not related to this one actually. That trial is completed. Default language. Language we have to define here. Event website is not needed. Root page. If you need to define a here default language, let's use here. If you want to use any help, it is not like everything we have set up here. Define default language. Design is to go to setup, add a required language, default power pages design. We have logged in, right? Last time. This is the default page that we have to utilize here. Go to setup. Hope you are able to see my screen. Nine four one 941. These are the active website which are created here.
Here you can edit your site. Now here you have more flexibility, like whatever information you need to complete, even you can open this complete website code into your code also. Widget security, here you can run security scan also. Web roles, here you can define. Here page permission you can define here in the home page. Table permission you can define. Even you can use here that security agent also. Site visibility advanced setting you can do here. So let's discuss with web roles. So we have discussed these three web roles, right? This is administrator, this is anonymous users, and this is authenticated users. Page with access, administrator, manage page permissions, here you can do this one. And web roles, these are the web roles here. Add new web roles. This one is for authenticated users. Here we are defining different types of roles here. So these are the web roles here.
See here, even you can define and even you can manage the contact also here. So here you can define the roles to the contact levels. So suppose there is one contact. So here we can enable that particular users so that they can log in into the Power Pages portal. This is the site here, external identity for this contact, so that these particular users can see the portal access. Here you can define the web roles, employee, influencer, department managers, these particulars. Now this is the custom in live. Actually, this particular contact form is customized. Here user can change the password also, create invitation, assign. So for this particular contact, here in this particular web portal contact, we have option to give even for this particular contact, so that we can give the web role also, so that we can define this specific user can have this specific access. But this particular page is customized here, so that web role is removed from this particular page. So here let's check that one in the contact level.
So these types of, okay, so let's see here table permission also. So suppose here new permission I can give here. See, suppose even if I can in dynamic CRM, I can give the access level, different access level. So here global access means so all record in the tables to the users in the selected rows. Contact access so row in the tables associated to the signed in the contact. Account access, account and contact means here there is a parent child relationship here related to self access is also users can make changes to the contact. So for example, change the contact detail in the profile page. So self access if I have given here, even permission to I can give read level, update, create, delete, append and append to. Suppose read and create permission I have given, and I can add this one to the super admin role. So this table permission, this student role permission for this account entity, self access I can give, and that particular table permission I have added into the super admin roles. Suppose I want to expose my contact entity. So new contact for contact access for student web roles. Global access means they can see all the data here. Read, update, and create. And also I can add this one to the super that I have defined here. So likewise, I can expose now what it means here for that new super admin or this. Okay, so let's create one permission also that we have given into the super admin only. Okay, so web role we have to create one web role also. Actually, we have created that student one for other site. This site is different. That's why that student profile is not showing here. Now here student web role website here is this one. Student roles. Yes. Now you are able to see here also.
Let's refresh it. Now you can see super admin, student web role. Now permission, table permissions. Like, let me edit this one, add roles. We can add this one into this one also. Now I want to expose student account. Let's edit. Access for now. Likewise, if so, it means now when this particular student can log in into the system, they can see account associated to this particular contact and contact associated to this particular one. Self access here. So likewise, suppose I can create a page permission also. Home page is already there, the default page. Now, if we have created any other page, so here we can see the level of page here. So page level permissions also we can create here. Web application firewall we can define here also. The rules, whatever firewalls rules we can define. But in this particular web roles, like we have administrator, anonymous or authenticated users, and we have created two new web roles here, students web roles and super admins web role. In this particular student web role, we have created table permissions for account and contact, and we have associated those two web roles, that tables permissions, to these specific web roles. Okay, so now we are over the times. Tomorrow we will discuss from here how and what is the difference here, and how to even add those web roles into the contact level, and how it's impact to the logged in users here. Okay, so let's try to cover this one quickly tomorrow, and then maybe we can move further. Any questions? Otherwise, we'll connect tomorrow. Thank you, everyone.